आज हम दिखाने वाले हैं आपको प्यूरीफायर बनाना। और हमारे पास में एक चीसीस रखी है और उसके अंदर हम प्यूरीफायर को बनाने वाले हैं। तो प्यूरीफायर को बनाने के लिए हमारे पास जो सामान चाहिए था सब रख लिया है। मैं आपको दिखाता रहूँगा क्या क्या चीज़ मैं लगा रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूँ पहले यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैंने रखी हुई है। एक ये SMPS है जो इसको पावर सप्लाई देगा। साथ में ये एक सेडिमेंट फिल्टर है और ये दो कार्बन फिल्टर है जिसमें एक पोस्ट कार्बन है एक कार्बन है। और ये एक सैमुलेट वाल है जिसका काम होता है पानी को रोकना और चालू करना। ये एक लो प्रेशर है, जब पानी नहीं आता तो मशीन बंद हो जाती है, मशीन चलती नहीं है। ये लो प्रेशर से आने वाले हैं। ये यूवी चोक है जिससे एक यूवी बैरियर हम लगाएंगे। इसके अंदर एक यूवी लाइट लगी होगी जो ब्लिंक करेगी, जलेगी। इस तरह के हम सारे पार्टीशन लगा लेंगे और छोटे मोटे कई सारे कंपोनेंट इसमें लगने वाले हैं। साथ में जैसे पाइप लगेगा, एल्बोज लगेगी, यूनियन लगेगा और फ्लूड वाल यहाँ पे लगता है, फ्लूड वाल लगेगा, एक अंदर बोर्ड लगेगी जो टैंक में पानी जाता है। तो वो सब कुछ में लगाने वाला है। आपको अगर प्यूरीफायर बनाना सीखना है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा बिना स्किप करे। पूरा वीडियो देखिए और प्यूरीफायर बनाना सीखिए। साथ ही में वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चैनल सब्सक्राइब कोई नहीं करता, आते हैं वीडियो देख के चले जाते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको इस तरह की जानकारियाँ आगे मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को फटाक से।